Dear students, Indu Sharma presenting to you lesson Everest MERI SHIKHAR YATRA. It is written by Bachenderi Pal for class 9th, course B, CBSE students, part 1. Students, let us read about some Bachenderi Pal. She is the pride of India. बचेंद्री पाल 1954। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का कार्य जुटाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। बचेंद्री पाल was born on 24th May 1954 in Bampa village in Chamoli district of Uttaranchal. Bachendri is the third child of her mother Hansa Dei and father Kishan Singh Pal. The father was unable to bear the cost of her studies, so Bachendri had to meet the expenses of his studies beyond the 8th grade by sewing and embroidering. दसवीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। After passing 10th standard, the principal of Bachendri agreed to her father for her father's studies. Bachendri did her MA in Sanskrit in spite of such odd conditions and then B.Ed. Received education. This dedication towards the goal earned her the distinctions of being the first Indian climber to conquer Everest. बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। Bachendri had the urge to climb the mountains since childhood. When his elder brother used to stop her from climbing the mountain and provoked her 6-year younger brother to climb the mountain, then too Bachendri felt very bad. She used to think that why the brother does not understand that what his younger brother can do, the sister can also do it. Why do people consider girls so soft and delicate? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में, जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई
चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। However, her desire to climb mountains continued to be fulfilled even her childhood, since her family spent some months of the year in a high altitude village and some months in another village situated in the lowland below the mountain. During the months when the family moved to the low-lying village, Bachendri also had to go to school in those months. 5-6 miles of mountain climbing had to be climbed and descended. इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। While Bachendri's studies were completed, the Indian Mountain Foundation started the search for women who had the courage to go on the Everest expedition. Bachendri joined this expedition team. During the training, Bachendri successfully climbed the 7,500-meter high Man Peak. After many months of practice, the day finally arrived when she set out to conquer Everest. बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुतांश उसी विवरण से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री ने उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। Bachendri herself has penned down the entire account of her thrilling mountaineering journey to conquer Everest. Presented excerpts has been taken from the same description. This captivating piece narrates the moment by moment of hoisting the tricolor from that last stop of Bachendri to reaching the summit. While reading this, it seems as if the reader or students is also going to the summit of Everest, bearing all the dangers themselves, following her footsteps. एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। एवरेस्ट माय समिट Everest. Everest expedition team left Delhi for Kathmandu on 7th March by plane. A strong advance team had gone long enough to clear the path of
insurmountable, insurmountable snow before reaching our base camp. नमची बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमची बाजार नाम ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। Namchi Bazar is one of the most important urban areas of Sherpa land. Most of the Sherpas are from this place and the surrounding villages. It was Namchi Bazar where I first saw Everest, which is famous in Nepali as Sagar Matha. See, look here, students, a one peak of Himalaya as Sagar Matha. So, Bachendri was like the name Sagarmatha as Himalaya. Sagarmatha means the forehead of the ocean, and the Everest is the highest peak in the world, and at the same time Himalaya is also the pride of India. That name Sagarmatha, according to Bachendri Pal, she liked this name very most. एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। See, look here, students. In this picture, we are looking as plum plume. According to Bachendri Pal, looking intently at Everest, I saw a huge plume of snow, which looked like a flag waving at the top of the mountain. I was told that the sight was caused by the wind blowing 150 km or more around the top of the summit, as dry snow from the strong wind kept blowing over the mountain. The snow flakes could have been 10 kilometers or longer. That we call plume. शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। Everyone who went to the summit had to face these storms on the southeastern hill.
especially in bad weather. This was enough to scare me, yet I was strangely attracted to Everest and wanted to face its toughest challenges. जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें स्लगलन हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहोत्से लाहौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। When we reached Paris on 26th March, we got the sad news of the death of a Sherpa porter due to an avalanche. A huge snow cliff from Lahotse side from the slope of a straight hill on the left side of the expedition team going to Khumbu Snow. सोलह शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। That a huge snow cliff from Lahotse side from the slope of a straight hill on the left side of the expedition team going to Khumbu Snow had slipped down. Of the squad of 16 Sherpa porters, 1 died and 4 were injured. So students, in these lines or paragraphs, we read that in her role that Bachendri Pal was found on climbing mountains since childhood. She did not even know when his hobby became the purpose of life. To fulfill this objective, she made her mind strong, working very hard. Her hard work was successful and she started to achieve her victory over the Himalayas. The destination was very difficult, but when she is determined in his mind, then every impossible task becomes possible. इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। Seeing the depression on the faces of the members of the expedition due to this news, our leader Colonel Khuller made it clear that in a great expedition like Everest, man should readily accept the dangers and sometimes even death also. So explanation is, students, Bachendri Pal had to face many difficulties during her journey. After the death
of the Sherpa Bachendri Pal became very sad. Then their leader Colonel Khullar also explained that we have to forget such sorrows by underestimating them to move forward in a big goal. उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खंबो हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। The deputy leader Premchand, who was leading the advance team, returned to Paris on 26th March. He informed us about the Khumbu snowfall condition, our first major obstacle. He said that his team had cleared the way to Camp 1, 6,000 meter, which is just above the snowfall. He also told that all the major difficulties have been taken stock of by making bridges, tying ropes and marking the way with flags. He also pointed out that glacier is a river of ice and snowfall is still on. Irregular and erratic changes in snowfall may ruin all the work we have done so far, and we may also to redo the road opening work. बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। Before reaching the base camp, we got the news of one more death. Our kitchen assistant had died due to the unfavorable climate. We were certainly not running in a promising position. एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लाहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। I had seen Mount Everest twice before, but from a distance. On reaching the base camp the next day, I saw Mount Everest and its other ranges. I stood stunned and gazed the icy zigzag rivers surrounded by the heights of Everest, Lahotse and Nutse. See, look here, students, you also in this picture the base camp and the ranges of the Himalayas, the Lhotse and Nutse and others.
Base camp. Base camp means, see, I want to explain you about the base camp. Base camps are rudimentary campsites at the base of Mount Everest that are used by mountain climbers. Mountain climbers during their ascent and descent. They are also visited by hikers. South Base Camp is used when climbing via the southeast ridge, while North Base Camp is used when climbing via the northeast ridge. हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। The snow itself was a sort of haphazard fall of snowflakes. We were told that the flow of glaciers often stirred the ice, causing large ice often suddenly take on dangerous position for others reason. Sorry, we read it again. हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। The snow itself was a sort of haphazard fall of snowflakes. We were told that the flow of glacier often stirred the ice, causing large ice cliffs to collapse immediately and often suddenly takes on dangerous position for other reasons. सीधे धरातल पर straight to the ground धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। Straight to the ground. The thought of the crack breaking and the thought of this crack turning into a deep spread snow fissure was very frightening. See, look here, students. There is a snow fissure. We called it that deep place. A creeve is also called an ice fissure in a deep linear crack in an ice sheet or glacier resulting from the opposing force produced by their movement at different rates of speed. The force builds
until their associated shear stress is sufficient to break the ice along the faces. So the thought of the crack breaking and the thought of the crack turning into a deep spread snow fissure was very frightening. इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा. Even more terrifying was the knowledge that during our entire stay, snow would touch about a dozen climbers and porters daily. दूसरे दिन आने वाले दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए. डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें अल्मोनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी. The next day, we took most of our new arrivals, the food, to the snow halfway point. Dr. Meenu Mehta gave us details information about the construction of temporary bridges with aluminum ladders, the use of logs and ropes, the tying of ropes to the slanted walls of snow, and the engineering work of our advanced team. तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था. रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे. हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे. कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं. The third day was fixed for practicing the climbing by hauling luggage from snow to Camp 1. Rita Gombu and I were climbing together. We had a walkie-talkie from which we were giving information about our every move at the base camp. Colonel Khuller was overjoyed when we informed him to our arrival, as we were the only 2 women to reach Camp 1. अंगदोर जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया. यह संतोषजनक प्रगति थी. Angdorji, Lobsang and Gagan Bisa finally reached South Col, and on 29th April they set up Camp 4 at 7,900 meters. This was satisfactory progress. जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे. उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए. जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है. When I was at base camp in April, Tenzing came to visit us with his younger daughter, Deki. He laid special importance to the
fact that every member of the team and every Sherpa porter should be consulted. When when it was my turn, I introduced myself by saying that I was a complete beginner, and that Everest was my first expedition. एवरेस्ट इज माई फर्स्ट एक्सपीडिशन। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। Tenzing laughed and told me that Everest was his first expedition as well, but clarified that he had to climb Everest 7 times before reaching the summit. Then placing his hand on my shoulder, he said, "You look like a strong woman, mountain girl. You should reach the top of the top. You should reach the top in the very first attempt." Students, you know who was Tenzing Norgay? Tenzing Norgay, born Namgyal Wangdi, was also referred to as Sherpa Tenzing, was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. He was one of the first 2 people known to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29th May 1953. The first time Tenzing attempted Everest, he was just 19 as part of Eric Schimphon's 1935 expedition. Over the years, he took part in several more failed attempts, including one in 1947, which involved illegally entering Tibet, and another one in 1952, where him and Raymond Lambert made it within 250 meters of the summit, the highest that anyone had ever been. They were forced to turn back due to the shortage of equipment. They had no sleeping bags, no stoves, no drinking water. The next year, Tenzing Norgay took part in the 9th British expedition to Everest, led by Colonel John Hunt. He was the leader of the team of Sherpas on the expedition, and it would be his 7th summit attempt. Tenzing would later tell a reporter, "6 times I climbed on the mountain. The 7th time I tell myself I can't fail." So Tenzing Norgay was the first person who climbed and win the Everest summit with Edmund Hillary on 29th May 1953. So student, this is the part 1 of this lesson, Everest MERI SHIKHAR YATRA. I'll be presenting you very soon of this part of this lesson, part 2. If you like my video and my explanation, please click on like, share my video with your friends and subscribe my video. Thank you very much.